बारिश हो रही है काफी, आप यहीं खड़े रहोगे? नहीं, मैं आपको सर, आपका मिस्ट्री गेम जो आप पेश करने वाले उसके लिए मंच आपका है, सो आई हैंड इट ओवर टू यू। चलिए, जैसे सीरियल किलर के लिए लोगों को मारना एक खेल जैसा होता है और बताया जाता है कि ये खेल उनके लिए बड़ा ही दिलचस्प होता है, चाहे भले कोई भी रीजंस हो उसके पीछे। हम ये इस चीज की शुरुआत एक खेल से ही करते हैं। मैं आप में से कौन एक खेल खेलना चाहेगा? आप खेल खेलना चाहेंगी? आप खिलाड़ी हैं? तो फिर नहीं, खिलाड़ी को छोड़िए, ये खेल खेला। देखिए, खेल बहुत दिलचस्प है। इसके अंदर जीतने वाले को एक डिज्नी हॉटस्टार की तरफ से एक बहुत बड़ा हैम्पर मिलेगा और साथ में पूजा एंटरटेनमेंट की तरफ से 50,000 का इनाम वाउचर कुछ भी मिले। अभी हाथ खड़े हो गए तेरे, मतलब 2 मिनट बोलने तो दे। हाँ, तो चलिए, मुझे आप में से 5 जन को चुनना है, लेकिन एक एक करके। और वो खेल क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले कौन आना चाहेगा? सबसे पहले मैम, आप आइए 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 आइए, जल्दी आइए। अभी इतना टाइम, बैग छोड़ दीजिए, कोई नहीं करेगा चोरी। आइए, जल्दी आइए आइए, चुस्ती दिखाइए। नाम बताइए। सीमा, आई एम सीमा सिन्हा। सीमा को तो आप सब जानते हैं, मैंने इनके साथ बड़े इंटरव्यू किए हैं। सीमा जी, गेम ऐसा है कि आपको, ये बहुत सारे सीरियल किलर्स हैं, ये सबकी फोटो लगी हुई है, कहीं में नाम भी लिखे हुए हैं। आपने एक सीरियल किलर का नाम चुनना है और बताना है कि वो किधर है। और आपके पास कितना वक्त? पॉइंटर निकाल दीजिए उसको वहां से। आपके पास वक्त है 1 मिनट का। ये सारे सीरियल किलर्स हैं दुनिया के, ओके? सारे। अरे पहले से ही चेक करोगे, मतलब इधर रहो। मीडिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी। आइए, चलिए, एक निकालिए। शाबाश, पढ़िए, लाइए, फोन दे दीजिए मुझे। क्या लिखा है? गौरी शंकर ऑटो शंकर। गौरी शंकर ऑटो शंकर, ये एक सीरियल किलर है। अभी ये इनको इधर ढूंढना है। इनके पास 1 मिनट का वक्त है और इनको इनाम में मिलेगा 50,000 रुपए और साथ में एक डिज्नी हॉटस्टार की तरफ से एक हैम्पर। ओके, शुरू करते हैं। 1 मिनट आपका वक्त शुरू होता है अभी। ऑटो शंकर, जल्दी जल्दी फुर्ती दिखाइए। गौरी शंकर ऑटो शंकर कहां है? इन्वेस्टिगेट कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, पता करिए कहां है। जल्दी जल्दी जल्दी, 42 सेकंड्स लेफ्ट। देखिए कहां है वो। कहां है वो ऑटो शंकर? जल्दी जल्दी। मिला मिला ऑटो शंकर। यही है, और 5 सेकंड पहले इन्होंने ढूंढ लिया है। यही है यही है यही है, बस हो गया, समझ गया समझ गया मैं। आप 5 सेकंड पहले जीती हैं। कैसा लग रहा है? ये क्वेश्चन हम आपसे पूछते ना, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। आई थॉट आई वोंट बी एबल टू फाइंड आउट, आइडेंटिफाई, बट लकीली हो गया। तो ये आप, ये सारा श्रेय किसको देंगी? अपने आंखों को? नहीं, आपको, बिकॉज आपने मुझे चूज किया था। क्या बात है। Because you selected, you said you come on the stage. ओके, तो
तो चलिए हैम्पर कहाँ है? और ओके, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। और आपको 50,000 रुपए आपके घर में आके दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, पक्की बात है, हंस मत, पक्की बात है, ऐसा थोड़ी बोल के चले जाएंगे। पूजा एंटरटेनमेंट के हनी और जैकी खड़े होके बात है, मैं जैकी भगनानी 50,000 का वादा पूरा करूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अब कौन आना चाहेगा? अब मैडम फोन फोन फोन। ओके, आइए सर, आप आइए, पीछे वाले आइए आइए, हाँ हाँ आइए आइए आइए, जल्दी से जल्दी से। आ जाओगे उसमें से निकल आओगे। योर नेम? राजीव विजयकर। राजीव विजयकर, आप तैयार हैं? आपको पता है क्या करना है? द होल सेम थिंग, हाँ, कुछ अलग नहीं करना है। रेडी, आइए, निकालिए अपने आप ही। यू कैन स्पीक व्हाट इट इज। सीमा गावित। सीमा गावित। अरे कोई इधर मत ढूंढिए, इधर कोई नहीं है। इट्स अ सीरियल किलर नेम। वो भाई साहब इधर उधर देख रहे हैं कौन है। ओके, सो आर यू रेडी? यस। ऑन अ मार्क, गेट सेट, गो। गो सर। सीमा गावित, ढूंढिए कहां है सीमा गावित। कशाला आहे? कशाला आहे? सर 24 सेकंड्स लेफ्ट. सीमा गावित. सीमा गावित कुठे गेला? कुठे गेली ती? सीमा गावित. सीमा गावित. हो गया टाइम. सीमा गावित आप नहीं ढूंढ पाए, मैं खुद ढूंढ रहा हूं. ये रही सीमा. There she is. But he tried his level best. Sorry जनाब, sorry. थैंक यू. Okay, thank you. अब कौन आना चाहेगा? चलो, एक कहते हैं कि फेक फोटोग्राफर की नजर बहुत अच्छी होती है. आजा तेरी नजर चेक करता हूं बेटे. आजा तेरी नजर चेक करता हूं. आजा. क्या नाम है? आतिश. कितनी उम्र है तेरी? 25. तो फिर तो नजर तो अच्छी होगी. और दिमाग? अच्छा, दिमाग 25 साल का है या 30 या 35 का? 25 साल का. 25 साल का दिमाग, 25 साल की उम्र. तैयार है? आओ भाई. मैम पढ़ जोर से. मोहन कुमार. और उसको क्या बोलते हैं? साइनाइट मोहन. मोहन कुमार, साइनाइट मोहन. Okay, he was also one of the serial killer. Okay, ready? On your mark, get set, start. Cyanide Mohan. मोहन कुमार, साइनाइट मोहन. एक घबरे,
ये काय को जैकी का नुकसान कर रहा है? ये घबरे 15 सेकंड, अरे जल्दी हिलना, 25 साल। Time is up. Time is up. Time is up. Cyanide Mohan. Cyanide Mohan. इधर ही होना चाहिए कहीं। ये रहा, ये साइनाइड मोहन। ये देख, ये लिखे ना साइनाइड मोहन। क्या यार तू 25 साल का होके देखा नहीं तू? पक्का तू फोटोग्राफर है कि कोई और है? हाँ? फोटोग्राफर। पक्का? कितने साल हो गए? 6 दिन हुए? साल। अच्छा। चलो अभी नेक्स्ट मैम, यू वांट टू कम? कम ऑन मैम। रेडी? हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? पूजा पटेल। हाँ? पूजा पटेल। पूजा पटेल। यो अच्छा, उम्र नहीं पूछनी चाहिए, सॉरी, उम्र नहीं पूछूंगा, उम्र नहीं पूछूंगा। रेडी? आपको पता क्या करना है? रेडी? ओके, निकालिए, लाइए, जोर से पढ़ दीजिए। देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा। रेडी? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। Seconds. 37 seconds. 31. 17. 1 over. आ जाओ मैम, आ जाओ, छोड़ दो, नहीं मिला। क्या नाम है? देवेंद्र शर्मा। ओके, देवेंद्र शर्मा। ये देख, देवेंद्र शर्मा का कबूलनामा। पटेल जी, आप बाहर खा गए। हाँ, बैड लक। या सर। लेकिन आप जब पहले उधर गए थे तो सीधा आपको नजर नहीं आया, आप यहाँ खड़ी रही इतनी देर, ये सामने लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, गुड लक। फोन, जोरदार तालियां। अब कौन आना चाहेगा? कोई तो आके जीतो। अरे उस आदमी का नुकसान करो। चल तू आजा, आजा जल्दी जल्दी, भाग क्या हाँ, तो मैंने कब मना थोड़ी किया। राहुल जी, निकाल। जोर से पढ़ दे। अब ये नहीं, अगर ये ढूंढना नहीं तो फिर लाना। चार्ली शोभराज नहीं, चार्ल्स शोभराज नहीं हो। ओके,
ये अगर नहीं ढूंढा तो फिर ओके रेडी ऑन योर मार्क गेट सेट गो चल चल चार्ल्स सोबराज को ढूंढ चार्ल्स सोबराज को ढूंढ अरे बहुत इजी है ढूंढ जल्दी जल्दी ढूंढ ये घबरे चार्ल्स सोबराज सात सेकंड खत्म अरे कोई तो दो किधर मिला चल तेरे को अभी भी देता हूं है नहीं अभी भी नहीं है चार्ल्स सोबराज ये बोलता है चार्ल्स सोबराज तमिल में था क्या लिखा हूं। ये रहा बेटा ये रहा चार्ल्स सोबराज है ना ये देख इधर देख देख लिखा हुआ है चार्ल्स सोबराज तो तेरे लिए बड़े अक्षरों में लिख दे बोलता इतना बारीक में लिखा तो बहुत बारीक लिखा हुआ तो कितने बड़े 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 में लिखूं 24 का फॉन्ट बनाऊं तेरे लिए अरे कैसा आदमी है बोलते इतने छोटे में लिखा तो ऐसे ही ले लेता पैसे आके चल ओके थैंक यू चल वन मोर ट्राई ओके कम मैम यू कम फास्ट मैम कम ऑन मैम कम ऑन योर नेम सलोनी सलोनी आज स्कूल की छुट्टी है नो रीड इट लाउडली रेणुका शिंदे रेणुका शिंदे वेट लुक दे रेडी आप करती क्या है आई हैव डन कॉलेज बस तो यहाँ घूमने हैं फ्रॉम मीडिया Oh, you're from media. Okay. So Renuka Shinde ji is going to sorry, not Renuka Shinde ji. She is going to catch Renuka Shinde. Okay. On your mark. Get set. एक काम कर तू ही बता दे 33 seconds ma'am you have to run quickly 27 come on yeah come on you're cold you're getting hot you're again cold you're very cold time is up ma'am ये देखो रेणुका शिंदे रेणुका किरण शिंदे दुख हुआ बहुत दुख हुआ पर आप यहां तक आई थी मैंने तो आपको हॉट और कोल्ड भी बोला था वेस्ट हो गया चलो बट थैंक यू वेरी मच थैंक यू ओके हाँ बाजी करोगे तुसी करना है आजा जल्दी आ फिर कैमरा लेके ना आई
आजा जल्दी आ जल्दी आ की ना भाजी गुरजीत सिंह कितों है क्यों बॉम्बे तो ये कर अच्छा बॉम्बे किते अंधेरी ईस्ट अंधेरी ईस्ट विच चलो जी ले आओ जी निकालो कड्डो रमन राघव रमन राघव रामन राघव ओके रेडी चलो कम ऑन लेट्स सपोर्ट हिम एवरीबॉडी कम ऑन क्लैप फॉर हिम लेट्स गो रमन स्टार्ट चल 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 रमन राघव निकाल जल्दी फटाफट फटाफट कहाँ है वो चल चल जल्दी जल्दी पाजी पाजी कोल्ड है गया उठे चलो पाजी जल्दी ओए इत्थे और एक मिनट कह रहे एक और मिनट अगर तूने एक मिनट में नहीं ढूंढा तू देगा 50,000 हाँ इथे ही है वो रामन राघव पिक्चर भी बनी थी हाँ क्या बनता है कुछ नहीं बनता है बल्कि इसका कैमरा छीन लो चलो थैंक यू जी अच्छा एक बात बताओ सबसे ज्यादा यहाँ कौन खुश है जैकी सबसे ज्यादा जैकी खुश है मैं भी करूं मैं क्यों करूं वो नहीं देगा मेरे को जैकी मैं करूं तू देगा चल कोशिश करता हूं ओके पीछे नहीं जाऊंगा यहां आगे से थैंक यू टेड बंडी रेडी ऑन ए मार्क गेट सेट गो यहां पे चलो मैं भी हार गया अच्छा किसी न्यूज चैनल वाले को बुलाया पीछे से हाँ जी कौन अपना कैमरा छोड़ के आएगा लेकिन कोई बात नहीं इसमें से वापस
फास्ट रहेगा। नाम क्या है? फरहान हाँ? फरहान फरहाद, कौन से चैनल के लिए? राष्ट्रीय प्रोडक्शन राष्ट्रीय प्रोडक्शन क्या कर रही है? अच्छा, चलो ठीक है, रेडी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे इसमें से ही कुछ देना पड़ेगा और इसको सब पता है कहाँ है, लेकिन फिर भी एक रिस्क लेते हैं। लेकिन इसके लिए इसको सिर्फ 45 सेकंड मिलेंगे, बराबर है? क्योंकि क्योंकि ये सब हम ढूंढ चुके हैं अंदर, एंड इट इज गोइंग टू बी द सेम वन, सो आई थिंक द फेयर थिंग विल बी 45 सेकंड, बराबर? अरे ये तो वही निकला है। चाल सोबराज चल ठीक है, कोई बात नहीं। चाल सोबराज, तेरे पास 45 सेकंड, बता कहां है? स्टार्ट। ये जैकी, रोक इन लोग सबको। अरे जैकी जल्दी, उधर क्या देखते, चल सीधा देख, सीधा सीधा। भूल गया वो, भूल गया चाल सोबराज कहां है? अरे जल्दी, अरे हो गया। ये लिखा हुआ है ना, दिखा कि नहीं? यही है ना? हाँ यही है ना, चाल सोबराज। अरे यार, लेकिन इसकी गलती नहीं है, बेचारा बहुत दूर खड़ा था। चल, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ खेल के। इसके अंदर सबसे ज्यादा कमाई जैकी बगनानी की हुई और हमारा सबका नुकसान हुआ इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कॉल all my people who've been involved in this film. Cuttputlli and Akshay sir for a very interesting, very mysterious game जो आपने यहाँ पे खिलवाया. Thank you so much. And Seema, congratulations. Well done, well done. Well done, Seema. You're the rock star for the day. I think you should pat yourself. Well, I'm sure. I would like to say well done to everyone else but Seema. Sir, I had to, sir.
Jackie, you've saved on 3 lakh rupees. I'm going to ask you a question, then in return you can give me that, yeah? Don't forget Hotstar has saved them the hampers. They've also saved hampers. But did you all notice like we should absolutely compliment on the girl power. They came in with so much furti. वहाँ से भी भाग के आ रहे थे. All the women who were here, I'm like supporting And it's girl power here. the only girl who won this afternoon. So it's Seema, yeah? So the first question goes to Gaurav. Gaurav Banerjee, what are you going to do with these 4 hampers which we have saved? What is Disney Hotstar going to do? I'll play this game with you again and give you another chance at trying to win it. Okay, so we are going to play it again. Okay, fine. Thank you. Well, thank you. Well, I'm sure कई सारे सवाल होंगे जो हमारे मीडिया के दोस्त पूछना चाहेंगे, पर उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं. मैं पूछना चाहूँगा गौरव सर आपसे first कि Disney Plus Hotstar has been creating massive thriller shows, movies from the start of this year. Can we expect more such content? Yes, of course. And I think we really, really love thrillers as fans. They've done very well for us. Chandrachud is here and on stage right now. He was part of Arya, which is again complex, amazing thriller. And he was so good in it. Lovely to see you back on stage here. And we've had a bunch of others like Special Ops, like Thursday. So they've done very well. And I think fundamentally because our fans, viewers, really like thrillers. And there is a conventional understanding that the producing market has had that thrillers don't really do very well. And therefore, in box office, if you look at the trends over the years, people have tended to make comedies and action films much more than they have made thrillers. And we wanted to question that. And because that assumption comes from a belief that we want to challenge, that our audience doesn't enjoy thrillers because, thrillers have to be intelligent. And our belief is that our audience is thirsting for something which is intelligent. You want to engage. You want to test your brain power, as all of us were doing through the game that Akshay was getting us to play earlier today. So I think our belief is in the amazing intelligence of our audience. It has come through with incredible work on the storytelling front, which has happened with films that we have had on our platform and our drama series as well. And I'm really hopeful that this team and the wonderful work that this talented bunch of actors, producers and our director here has done will be appreciated by all of you. Well, thank you so much, sir. Thank you for quenching our thirst for some challenging content and always giving us the best. Thank you. Jackie, मेरा 3 लाख का सवाल आपके लिए. Well, Jackie, the production of the film looks really powerful, and I've known you for a long time. You've always been a visionary. How do you envision to create Cuttputlli? So firstly, the whole idea is everything starts from Akshay sir. He's been a very supportive person in our lives as Pooja Entertainment. And the whole idea was to create a straight-to-net film which is larger than life, which is engaging. And that's where it all started, and everything else Ranjit has done. But yes, that's how it started. Well, thank you so much and wishing you all the best. Ranjit sir, my question is for you. As Jackie said, everything else Ranjit has done. We saw the action scenes, the location, all of them looks very mesmerizing, stunning. So, Cuttputlli का ये जो मंच है, ये आपने कैसे create किया? First of all, I would like to thank the writer, Asim. I think he wrote the script. It's a fabulous script and very compelling and engaging one. So yeah, just follow the script. It was difficult during the pandemic because of we started shooting during the second pandemic. It was difficult to get the things right, but at the end it all came together and everyone worked hard, the entire team, my actors and everyone. So yeah, it was a very, very, very good journey doing this film. Well, wishing you all the best and thank you so much. And with that, I'm sure बोल रहे कि सचिन बस कर हमें भी सवाल पूछने हैं. So I'm going to open the floor for media Q&A. But उससे पहले would like to highlight before you ask the question, please mention your name, which publication you belong to, identify yourself, and do highlight whom you want to ask the question to. That way, it's easier for us to address it to the right individual. With that, I'm going to request our volunteers to also hand over the mic, and we open the floor for Q&A. Hello. Hi. Yeah, this is Seema. Yeah, I want to ask Akshay, Gaurav and Ranjit, this is a very difficult genre. Thriller is not an easy genre to make. And we have seen many thrillers in the recent past. So how does this stand out?
like this edge of the seat? I mean, how do you think it is different from other thrillers, or how does it stand out? Akshay, Gaurav and Ranjit can answer. So, to answer your question, every thriller, if you see, it's a little unique. We have tried to create our own way, the film. So, I guess when you see the film, you'll have your answer, how it's different. Right now, it's very early for me to get into the details of it, since it's a thriller. So, let's keep it under the wrap for now. You got to watch it on the 2nd of September. So not many people make movies on serial killers. It's a different kind of genre, and I have also never played in my life a thriller like this where I have to catch a serial killer. See, मेरा career जब मैंने शुरू किया था खिलाड़ी, that was a thriller, but this is completely different from that also. So for me, I have never come into this kind of a genre where I have to catch a serial. And the interesting part is, to catch a serial killer, it is not only about physical how you are physically. It is lot got to do with your mind. You have to play, because he is playing a mind game, and it becomes very interesting because एक के बाद एक चीज खुलती जाती है, and that what make this kind of a thriller very more interesting than that any other. Hi, Amit from Dainik Bhaskar. मेरा सवाल रंजीत जी से एंड जैकी एंड दीपशिखा जी से है, तीनों से, कि इस फिल्म मतलब लोग सुनते रहे कि ये साउथ की जो रत्तासन है तो वो उसकी एडेप्टेशन है या उस पर बेस्ड है. फिर इसका टाइटल शुरू में शायद मिशन सिंड्रेला था, एंड कसौली वाज क्रिएटेड इन इंग्लैंड. सो दीज थ्री क्वेश्चंस आई हैव. So which question is for which? फर्स्ट रंजीत जी अगर बता सकें, मतलब पहला तो. So it's inspired from Ratsasan, that's true. Secondly, ये film का भी Mission Cinderella नाम था नहीं. It was always Cuttputlli. So वो I think it just came out, I don't know from where. It wasn't a working. Came out from Mission Mangal. Mission Mangal. Because that was also with. Or because we did a film earlier called Bell Bottom, which was the mission base, so maybe from there. And we shot in UK. Lot of the film we shot in UK as well. We shot here in Mussoorie also. So yeah. Okay, दीपशिखा जी एंड मतलब जैकी, आपसे सवाल ये था कि कौन सी फिल्म मतलब थिएट्रिकल के लिए है और ये कठपुतली आप लोग OTT पे आ रहे हैं, तो वो डिसीजन कैसे आप लोग मतलब डिसाइड कर रहे हैं? देखिए क्या है, ये फिल्म हमेशा से डिजाइन थी टू कम स्ट्रेट टू नेट. जो मैंने पहले सवाल में भी जवाब दिया कि वो इंसेप्शन स्टेज पे डिसाइड कर लिया था हमने कि आई फील दिस इज अ ग्रेट जॉनर, लाइक गौरव सेड, we want to really put this out in the best way, and no other better platform than Disney to do this. So we are very happy to do that. And yes, I'm also a huge fan of Russo brothers. If you must have seen वो Extraction भी ऐसा हुआ था. So that's where it was always planned for OTT. So वो सवाल कि कौन सा OTT है, कौन सा थिएटर है, वो ये पर्टिकुलर जॉनर, ये पर्टिकुलर कंटेंट हमने फ्रॉम द वर्ड गो OTT के लिए प्लान किया था. अक्षय सर, आपसे एक सवाल है. अब जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि अरे आप ही पूछोगे? नहीं, बस एक ही सवाल. अक्टूबर में शायद ओ माय गॉड 2 भी आ रही है, तो मतलब और आपकी फिल्में लगातार आती रहे, हर महीने आते रहे, हम सब चाहते हैं, लेकिन एक गैप कितना मतलब आइडियल होता है कि एक. ये पहली बात है, अक्टूबर 2 को ओ माय गॉड तो बिल्कुल नहीं आ रही. अच्छा. तो मतलब आपके सूत्रों गलत बताया आपके सूत्रों में. ओके. तो और कुछ बस इतना ही है ना? नहीं, मतलब एक एक्टर की फिल्मों का गैप कितना होना चाहिए एक सालों में, मतलब देखिए बात ऐसी है कि पैंडेमिक के टाइम पे काफी फिल्में रिलीज नहीं हुई, बहुत लोगों की फिल्में रिलीज नहीं हुई क्योंकि थिएटर्स बंद थे, सब कुछ चीजें बंद थी, और काफी फिल्में जमा हो गई. ये नहीं होता ऐसे अगर पैंडेमिक नहीं आया होता. हम काम करते रहे, फिल्में जमा होती रही. तो अब ऐसा है कि हाँ, मेरी करीबन 4 फिल्में जो है वो रेडी है, लेकिन अगर पैंडेमिक नहीं होता तो ऐसा नहीं होता. तो उसके बीच में हमेशा 2 या 3 या 4 महीने का गैप जरूर होता. Hello. Hi. Help me with the mic here, please, on the right. I have. Sorry. Hello. Hi.
Who has the mic here? If you could raise your hand up, please. Thank you. Okay, Rakul from Web Dunia, looking very pretty. Thank you. So, मुझे ये बताइए रोल के प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ अलग से कोशिश या होमवर्क, क्योंकि इसके पहले भी आप कॉप के रूप में या हम लोग आपको यारी में तो देख ही चुके हैं. So, did it help you? And आपको second, ट्रेलर में से कहाँ पे लगा कि मैं कॉप हूँ? oh, maybe I'm sorry in that case. दीपशिका आप Sargun is cop. okay. Oh God, we've got this again. Oh, I'm so sorry for the confusion. सरगुन आपसे जानना चाहेंगे, आपके फिल्में भी चलती हैं, आपके सीरियल्स में भी उडारियाँ मुझे बहुत पसंद भी आता है. How do you manage with the time? कर लेती हूँ. अब पैसा कमाना है, नाम बनाना है, तो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा. बट कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता है. बहुत रेस्ट मिल गया पैंडेमिक में, तो उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना अच्छा लगता है. Chandrachur, here. Hi, how are you? And Well, thank you. yeah, good to see you. Thank you so much. Would you like to elaborate a little bit about your character? I think the best thing would be when the film releases, you would get to know more. But I'm playing a cop and a family man. Okay. And Playing a very good-looking cop. Oh, that's so sweet of you, sir. Basically, that's it. The rest, the film will speak for itself because, I can't reveal too much of the storyline. Thank you. Akshay, who's the villain in this film? How was it working? Wow. Akshay. What a question. Is it from आपको Hollywood? विलन बता दें हम. Hollywood or Bollywood? हाँ? Is it from Hollywood or Bollywood? What? Villain. अरे आपको विलन कैसे बता दें, मैम? नहीं बताओगे. मतलब Why is he under wraps? मैं एक काम करता हूँ. Why is he under wraps? मैं एक काम करता हूँ. आपको मैं लिंक ही भेज देता हूँ. आप देख ही लो. Achha, anyway, I believe my sources say that you have been worked. I mean, there were some children also in the film. How was it working with the kids? There's some children in the film. How is it working with the kids? How was it working with the kids? Oh, it was very good. आगे नहीं पूछूंगी. It was very good, ma'am. Okay, thank you. Anything the director would like to say On what, ma'am? about the villain? Villain. Hello? 2nd September you'll come to know. Just wait on. It's just 10 more days. Hello, yeah. इतना बता दूं, इनमें से ही कोई है. देख लेना. Hello, yeah, this is Rajiv here. Akshay ji, you had spoken to us at the press show of Bell Bottom in Surat about a movie. You were already in London. Is this the same film which was supposed to be an espionage thriller or something like that? No, it was a different film. So what is that film? When is that film coming up? That film I was not shooting. I didn't make it. Okay, so that didn't happen because that was also with Ranjit and Pooja, no? No, Pooja Entertainment. That was something else. Okay. Hi Akshay, this is Komal from Indian Express. I want to ask you, in times like today, when films are not working, actors are, struggling at the box office, do you think this is one way to make a safe space to make films for the OTT? No. See, films are not working. It is our fault. It is my fault. Okay? I have to make the changes. I have to understand what the audience wants. I want to do my changes. I want to dismantle my way and the way I think what kind of films I should do. So it is nobody else to be blamed, but it is me. And दूसरा question आपने क्या पूछा? Is this the safe space that actors are making by acting for films for OTT? No, it is not a safe. That also requires people's to say yes, we like the film or not, we don't like the film. So it is nothing got to do with safe. It's not a safety net. यहाँ भी आपकी film जाती है, release होती है, there are people watching it, the media is watching it,
the critics are watching it, the audience is watching it, they give whether they like the film or not. So there's nothing called safe. You have to work hard, and that's it, period. Gaurav, one question for you too. Since Atrangire also came on Hotstar and you've been working with Akshay, is he one of the bankable names that Hotstar has, and that's why you are working with him, even Ajay for that matter, but Of course. Akshay because he's here. Of course. I mean, and you don't need me to say this. Akshay has been one of the biggest stars this country has ever had. And he has been bankable when I was in school. And he is as bankable today as he has ever been. And not just Atrangire, which is an absolutely fantastic film, really close to my heart. The journey for Akshay and Disney Plus Hotstar actually started with Lakshmi. So it's the first big film that we did as Disney Plus Hotstar, and I have to publicly say today that it was Akshay sir's idea, and he made us think about it, and he encouraged us to dream big and think that a big scale movie with a superstar could go directly to streaming. It had not happened in India before that. So he and us, we started this trend together, and I think Cuttputlli is the next chapter in that. And we're damn excited about it, because I think today what is happening in India is that streaming is getting built as the mainstream way in which audiences want to connect with content, right? It's a new medium. It has only been there in a meaningful way in India for the last 6-7 years. When you compare that with television, television has been meaningfully here for 40 years, and cinema has been here for 100 years. So streaming is a new medium, is growing at a rapid pace. It requires incredible disruption. It requires massive resourcing. It requires bold bets, and hopefully all of us, and Disney Plus Hotstar in particular, is taking it with people who are also bold in their thinking. So I think what Akshay said earlier, right? It's a bold bet that he is taking, that Pooja Entertainment is taking with us, saying we're going to make a big scale film. We're going to mount it massively. We're going to put the best star cast in it, and we're going to put it on streaming, right? Because the assumption is that streaming data and performance can be a little bit of a black hole, right? So I think they're taking a big bet with us. We're taking it together as partners in the belief that we will together make streaming mainstream, which is, I think, fantastic for all our fans, everyone. It's easier to watch a show or a film on streaming than through any other medium, including television, because you as a fan can choose what you want to watch and when you want to watch it. Equally, if it really takes off, it opens up many more opportunities for creative people to do more work. Because I think if you look at it, streaming content has really exploded in India in the last few years, and it has not come at the cost of the number of theatrical films being made or the number of shows on television being made. There was a wonderful question to Sargun, right? So here is somebody who has acted in TV shows, acted in regional movies, produces TV shows, regional movies, and cinema. So I think for talented people everywhere, for new talent coming through, all this just means a greater, bigger canvas, which is good for the industry. अक्षय सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. सबसे पहले तो फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग है. सर, कहा जाता है कि एक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर के सामने सेट पे कठपुतली होते हैं. तो सर, आप कितना % सेट पर कठपुतली होते हैं और कितना % आपका सजेशन या इनपुट होता है? देखिए, फिल्म एक टीम वर्क होती है, बनाया जाता है, सब साथ में मिलके बनाते हैं. ऑब्वियसली डायरेक्टर जो होता है वो कप्तान होता है शिप का, वो लेके चलता है. बट यस, जब हम फिल्म बनाते थे, हम आपस में बात करते हैं, आई गिव सजेशंस, उनको अगर अच्छा लगता है तो वो लेते हैं. वहाँ के कोई लाइटमैन भी अगर कुछ बोलता है, स्पॉट बॉय भी कुछ बोलता है, तो इट्स लाइक अ टीम वर्क. तो वैसे उसी हिसाब से चलता है, जो इनको अच्छा लगेगा उसी हिसाब से होगा. रकुल, फिल्म का कोलैबोरेशन जैकी के साथ आपका किस तरह का रहा? कि आपने वक्त लिया हाँ बोलने के लिए कि झट से हाँ बोल दिया आपने फिल्म के लिए? Actually,
मुझे ये फिल्म डायरेक्टर की तरफ से आई थी एंड आई थिंक जैकी को बाद में पता चला था कि मुझे मेरी बात हुई है फिल्म के बारे में एंड मुझे जो अडेप्टेशन है जिस तरह से जो रोल है एंड जो कहानी है बहुत पसंद आई थी सो इट वाज मोर और लेस एन इंस्टेंट यस बिकॉज मुझे अक्षय सर के साथ भी काम करना था आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम्स टू वर्क विद हिम एंड या इट वाज एन इंस्टेंट यस कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब मैं अक्षय सर की बात करता हूँ या जितनी भी स्टार कास्ट इस वक्त मौजूद है दे आर और फैंटास्टिक सब अपने अपने फील्ड में महारत हासिल रखते हैं डायरेक्टर से मैं पूछना चाहूंगा कि ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन कि ये स्टार कास्ट होने चाहिए अक्षय सर को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है लेकिन वजह जानना चाहूंगा कि यहाँ यही लोग लीड करेंगे जब मैं और एक बात और कहना चाहूंगा जब मैं अक्षय सर की बात करता हूँ कॉमेडी से लेकर हर फन में वो माहिर हैं स्पेशल 26 देख लीजिए एक सीरियस किरदार निभा जाते हैं इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड यू वांट अक्षय सर टू प्ले द लीड सो आपने जो सवाल पूछा आपने ही आंसर दिया है आपने पहले ही कहा कि सारे ये जो एक्टर्स इतने टैलेंटेड है सो अगर टैलेंटेड है तो ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि वो हमारे फिल्म में काम करें एंड रही अक्षय सर की बात अक्षय सर के साथ काम करना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है मैंने फॉर्चुनेटली इज बिन काइंड कि मेरी ये दूसरी फिल्म है उनके साथ एंड मैं चाहूंगा कि आगे भी हो बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि अक्षय सर मैं क्या बोलूं उनके बारे में बहुत गलत हो जाएगा अगर मैं कुछ भी बोलूं इज टू बिग फॉर मी रकुल कहीं अभी किसी मेरी साथी दोस्त ने आपसे पूछा कि आप पुलिस के किरदार में हैं क्या तो आपने उनको करेक्ट किया नहीं मैं पुलिस के किरदार में नहीं हूं तो क्या सरप्राइज पैकेज होगा आपकी तरफ से आपको जो मेरा किरदार है वो 2 सितंबर को पता चल जाएगा जैसे सब कह रहे हैं आखिरी सवाल मेरी तरफ से मैं जैकी और दीपशिका दोनों से पूछना चाहूंगा अभी कुछ वक्त पहले जैकी ने जिक्र किया कि रूसो ब्रदर्स उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है आप दोनों से जाना दोनों यंगस्टर हैं पूजा फिल्म्स को आगे लेके जा रहे हैं क्या उनसे इंस्पायर हैं क्या उसी तर्ज पे आप दोनों काम कर रहे हैं या फिल्मों का चुनाव कर रहे हैं Go for it. I think जब स्क्रिप्ट हमारे पास आई and when we went through it, this genre is so popular on OTT and we wanted to give it that cinematic scale. And when we tied up with Disney Hotstar, we decided this is the best genre to showcase a cinematic experience, film direct to net. And I think that's the whole idea of giving it large scale entertainment in that genre which works for a platform. And इसीलिए हमने वो कदम उठाया है. ये और मैं ये कहना चाहूंगा कि रूसो ब्रदर्स के हम सब फैन हैं ऑफ कोर्स यू नो एज स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा हम सब फैन हैं और कोशिश करेंगे उनका 10% भी लाइफ में बना पाए तो बहुत बड़ी बात होगी आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड से मेरा सवाल Well, that's all the time we have for the Q&A. I'm sorry to. नो Sorry. मेरा सवाल रंजीत जी से है रंजीत जी हालांकि ये फिल्म आपने जैसा बताया असीम ने लिखी है और सीरियल किलर पर है लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जो साइको थ्रिलर्स होते हैं उनमें कमर्शियली कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी डाइजेस्ट नहीं कर पाए या क्लिनिकल साइकोलॉजी उसको खारिज कर दे आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या इसका ध्यान रखा गया है फिल्म में देखिए ये फिल्म बहुत जो स्क्रिप्ट असीम ने लिखी है बहुत ईमानदारी से लिखी है ये सोच के कि ये साइकोलॉजिकल एक थ्रिलर है तो कमर्शियल ट्रैपिंग्स की आप जो बात कह रहे हैं वो अगर आप जब फिल्म देखेंगे 2 सितंबर को तो आपको पता चल जाएगा कि इस फिल्म में फोर्सफुली कुछ नहीं है जो ऑर्गेनिक स्क्रिप्ट डिमांड करती है जो किरदार डिमांड करते हैं जिस तरह से उनकी कहानी आगे बढ़ रही है पर्सनल जर्नी एज वेल एज एक मेन प्लॉट है उसके हिसाब से ये फिल्म लिखी गई है तो कमर्शियल ट्रैपिंग्स लेने के लिए ताकि फिल्म डाइल्यूट हो जाए और हम कुछ एक्स्ट्रा कर दें वैसा कुछ नहीं है इस फिल्म में क्या ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है कुछ चीजें हैं ट्रू इंसिडेंट पर रशिया में एक केस हुआ था बहुत सालों पहले उसमें काफी सारी चीजें अगर आप आर्टिकल सो हाँ Gaurav sir, towards you, right? Nirali from India today. Hotstar as a platform is doing well in terms of the content. I want to ask you, how do you see the coming year for the platform in terms of the content that will be catered to the audience? Thank you. And yes, we are just getting started. So really excited about everything that we have on the slate coming up. And of course, today is a really big day for us because it's very rare that a film of this scale gets made directly for streaming. And therefore, this is a big day. We are deeply excited about it.
As you mentioned, we've had a good run. I think shows like Special Ops, Arya, Rudra have done well. Films like Atrangire as well. And of course, the Marvel films that we have continue to do really well for us as well. And big day on Monday, House of Dragons is also on Disney Plus Hotstar. So I think, yes, we are very excited about the kind of entertainment content that we are putting together in terms of some of the big shows, big films, amazing international content, and of course cricket. So I think it's a good mix. And yes, a lot more to come. I think we just announced that we are doing a show with Kajol, and she's making her streaming debut with us. So we'll announce further on that in the next few days as well. So good lineup coming up. You know, can't complain when you have Ajay Devgan, Akshay Kumar, and Kajol batting for you. Hi, this is Mayur here. Thank you so much. Well, I apologize to intervene. I request just one question, please. Yeah, please. Sir. Hi, this is Mayur from Beyond Bollywood. My question is to Akshay sir, and Mr. Gaurav can also answer this. Akshay जी, शुरुआत में गौरव जी ने इंटेलिजेंस की बात की, और जब हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो एक हमारा जैसे मतलब हिस्ट्री में देखा है द वर्ड माइंडलेस एंटरटेनर या लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड, तो इस टाइप की फिल्में भी चलती थी, लेकिन कोविड के बाद आई थिंक द गेम हैज़ चेंज. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आप इतने एक्सपीरियंस एक्टर है, आपने सभी जॉनर की फिल्में की है, बट ये जो जॉनर है माइंडलेस एंटरटेनर या लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड फिल्म, आपको क्या लगता है आज के दौर में इस जॉनर का फ्यूचर है? It all depends on the people's mood, what they want to see. Sometimes it does work. Agar even a mindless comedy, if it is given in the right way, and if the audience is in a mood, your film can click. I have seen it in my career, many films like that working, and so I think it all depends on what kind of a mood is my audience in. Yes, I agree. If Akshay wants to do the next Hera Pheri, like I'm signing up right now. So I think as viewers, each of us, right, there is a lot of times when you want to see something cerebral, and that's when you might want to watch a show like Rudra or a film like Cuttputlli. Equally, at other times, you've had a really tough day in the office, your boss has been difficult with you, there's some assignment you're struggling with, and then when you go back and you have a Hera Pheri to watch, I think you appreciate that as well. So I think you need a wide variety of content as a platform, and I think as artists, right, people want to do different things, and I think look at someone like Akshay, right, his career, it's as much about Hera Pheri as it is about something like Airlift, right, or Special Chabbis. So I think he's somebody who's really played this range in a phenomenal way, and that's an amazing guide for all of us as well on what we can do and must do as a platform too. Well, thank you so much, and with that, thank you. Well, that's all the time we have for the Q&A, and चाहता तो इतने सारे सवाल पूछे because we're all trying to get them to spill the beans as to villain कौन है, but ये सारी info हमें मिलेंगी on the 2nd of September when Cuttputlli streams on Disney Plus Hotstar, and as Gaurav said, we're just getting started, more to come. We'll get to know on the 2nd of September what happens in Cuttputlli. With that, thank you so much to the entire team. I request all of you to please step forward to capture the moment for a photo op. May I request our events team to please clear the chairs so we could have a nice stage to... Just asking. Yeah, please, thank you.